introducing Dr. Salman Haider, who, of course, along with the preceding Dr. Himani Banerjee, I must admit, are two of my favorite people in the world. So even though the introduction might seem long, for me, it's not long enough. So just to introduce Salman Bhai, Dr. Salman Haider has a PhD in psychology and taught for a long time at the Fatma Jinnah Women's University in Rawalpindi, Pakistan. But more famously, he is a poet, playwright, satirist, and public intellectual. Indeed, I would say one of Pakistan's most recognized and well-loved ones. Many of his poems have become anthems for progressives and the left in Pakistan, puncturing the self-satisfied and ossified religiosity, militarism, and national oppressions. In 2017, he himself became, so to speak, a guest, a quote-unquote guest of the Pakistani state, an act of entirely in character thuggery, heralding the graduation of the Pakistani state's dirty war of disappearances from peripheral Pakistan to its very core. And in this case, targeting intellectuals like Salman Saab from the mainstream or central Pakistan who express solidarity with those exploited, oppressed, and on the margins. In the poems to follow, Dr. Haider, now in forced exile, deals with exactly some of the above mentioned themes, and also those we have been discussing throughout the day. And while much is lost in translation, though hopefully not that much in this case, as you will soon hear the excellent translations by Dr. Tayyiba Jawani, some of the themes I would like to flag here are as follows. One, how the violence of militarism does not remain confined to the public sphere, but enters the privatized or domesticized spaces of reproduction themselves. Second, how Salman Bhai narrates the very embodied, visceral, and indeed what Fanon would call the very epidermal stamping of colonial and neo-colonial violence. Third, how Salman Bhai makes the imagery and metaphors of the amaltas trees and the robab musical instruments travel in some sense to link violence in different contexts from the 1970s East Bengal to the war on terror conjuncture of Balochistan and Pashtun areas of Pakistan. And crucially, and linking to what Himani was saying in the last session, on the responsibility and in Salman Bhai's acerbic expression, the flatulence of traditional intellectuals. Ultimately, Salman Bhai, in his own idiom and in his own style, raises the question raised many decades ago by Ngugi Thiong'o, and which remains relevant for us today. And I quote Thiong'o here, who asks, and I quote, how does a writer function in a neo-colonial society? He can, of course, adopt silence or self-censorship, in which case he ceases to be an effective writer. Or he can become a state functionary, an option some Kenyan writers, Thiong'o is saying, an option some Kenyan writers have now embraced, and once again cease to be an effective writer, of the people. Or he may risk, or he can become a state functionary, an option some Kenyan writers have now embraced, and once again cease to be an effective writer of the people. Or he may risk jail or exile, in which case he is driven from the very sources of his inspiration. Write and risk damnation, avoid damnation, and cease to be a writer. That is the lot of the writer in a neo-colonial state. End of quote by Thiong'o. It is with these considerations then that I leave you and hand over the proverbial mic to Salman Bhai. Thank you. Thank you, Ayaz, and for the kind words. And I know that all of you have been discussing a number of theoretical aspects of, say, Marxism and the other theoretical aspects of Marxism and communism and aesthetics and all that. And I know that you'll be obviously tired, and as I don't know, as Priyansh I think said, that it's 3:30 in the in India. So I'll try to keep it as brief as possible, and I hope that we'll be say taking not much of your time. First of my poem. So I'll be reading it in Urdu, and
Tayyiba, I thank Tayyiba for translating a number of these poems. I think a couple are by one of my friends, but majorly these poems are were translated by Tayyiba, and obviously Tayyiba will be say reading those poems to you. मैं उस अकीदे की औसत उम्र पार कर चुका हूं जो मेरे शनाख्ती कार्ड पर लिखा है। मैं उस अकीदे की औसत उम्र पार कर चुका हूं जो मेरे शनाख्ती कार्ड पर लिखा है। मोहब्बत की नज़में लिखने का वक्त चौराहों पर प्ले कार्ड थामे जिंदा रहने का हक मांगने में खर्च हो गया। मोहब्बत की नज़में लिखने का वक्त चौराहों पर प्ले कार्ड थामे जिंदा रहने का हक मांगने में खर्च हो गया। गाड़ियां मेरे पास से गोलियों की तरह गुजरती रही। जिंदगी 120 मील फी घंटा की रफ्तार से कम पर चलाना मना है। जिंदगी 120 मील फी घंटा की रफ्तार से कम पर चलाना मना है। इसलिए कोई ये पूछने को नहीं रुका कि मेरे हलक के कासे में नारों के सिक्के ही क्यों खनखनाते हैं। इसलिए कोई ये पूछने को नहीं रुका कि मेरे हलक के कासे में नारों के सिक्के ही क्यों खनखनाते हैं। मैं बैनरों के लट्ठे पर लिखने को वो मुकद्दस लफ्ज कहां से लाऊं जो पैदा होने का गुनाह बख्शवा सके। मैं बैनरों के लट्ठे पर लिखने को वो मुकद्दस लफ्ज कहां से लाऊं जो पैदा होने का गुनाह बख्शवा सके। सो ओवर टू यू तैयबा। Thank you, Salman Bhai. So the translation of this poem is, I have crossed the average age of the faith inscribed in my name. The time to write love songs was spent bearing placards on crossroads, asking for my right to stay alive. Cars zipped past me as bullets because it is forbidden to drive life at a speed less than 120 miles an hour. And no one stopped to ask why the begging bowl of my throat clatters only with slogans. Where do I find the sacred words to write on my banners to be pardoned for my sin, the sin of my birth? Thank you, Salman Bhai. Unmute you. Thank you तैयबा। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, तुम लोगों को कत्ल करते रहे यहां तक कि एहसासे तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारी गोलियों का निशाना बन गया। तुम लोगों को कत्ल करते रहे यहां तक कि एहसासे तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारी गोलियों का निशाना बन गया। तुमने बेगुनाहों को उनके बिस्तरों के सुकून से झपट लिया, उनकी सवारियों की राहत से नीचे धकेल दिया, उनके खानदानों की आफियत से खींच निकाला और उनके दोस्तों की राहत से उचक लिया। तुमने बेगुनाहों को इनके बिस्तरों के सुकून से झपट लिया, उनकी सवारियों की राहत से नीचे धकेल दिया, उनके खानदान की आफियत से खींच निकाला और उनके दोस्तों की राहत से उचक लिया। बाकी बच जाने वालों को खामोशी का घुन अंदर ही अंदर खाने लगा, यहां तक कि उन्होंने अपनी आवाज सुनना शुरू कर दी। वो किसी का इंतजार किए बगैर अपनी आराम गाहों से निकल आए और उन्होंने अपने जैसों को अपने गिर्द पाया। उन्होंने सवारियों को रोक दिया, आफियत को तर्क कर दिया और राहत को किसी और दिन के लिए उठा रखा और तुम्हारे दरवाजों पर अपनी आवाजें बुलंद कर दी। तुम्हारे हथियार खौफ खाने लगे, उनकी लबलबी पर रखी उंगलियां हैरत से अकड़ गई। तुमने एहसासे तहफ़्फ़ुज़ को कत्ल करते हुए नहीं सोचा कि लोग घरों में खौफजदा हो जाएं तो सड़कों पर निडर हो जाते।
Over to you, Taiba. Thank you, Salman Bhai. So this poem is on the Pashtun Tahaffuz movement, which many of you have probably heard about. So the title is You Kept Murdering Them. And you kept murdering them until your bullets rent even their sense of security. The innocent you snatched from their tranquil beds, you pulled from their vehicles, you dragged from the sanctuary of their families, and you nabbed from the solace of their friends. Those who remained were consumed from within by the din of silence until they started hearing their own voices. And then, without waiting for naught, they marched from their havens and found they were surrounded by others just like themselves. So they stopped their cars, they abandoned their sanctuaries, they left aside all solace for another day, and they clamored for you at your doors. Your weapons shook with fear, and their fingers poised on their triggers clenched in surprise. When you were annihilating their peace and security, you never stopped to think that when people are fearful in their own homes, they become fearless on the streets. Thank you, Taiba. So, हमारी गर्दनें फंदों के नाप की बनाई जाती हैं। सूरज हमारे जिस्मों पर रोज धूप की चादर चढ़ाता है, यहां तक कि उसे हवा उड़ा ले जाती है। रात अपना चिराग हमारे सिरहाने जलाती है, यहां तक कि उसके घर रोशनी का फाका हो जाए। चींटियां हमारे मांस पर पलती हैं, जब तक कि चिड़ियां इन्हें अपनी चोंचों में झपट नहीं लेती। हम चोगा बनकर बोटों की चहकार में सुनाई देते हैं। हड्डियों की राख जंगलों में बखेरने वाले हमसे अपने हाथ झाड़ कर पलटते हैं, तो हम बारिश के पानियों की उंगली थामे पौधों की रगों में दौड़ने लगते हैं, सावन की पहली बूंद के साथ कस्बों की गलियों में निकल आने वाले बच्चों की तरह। हम घास की पत्तियों पर चमकते हैं, तो कभी पगडंडी पर खिले फूलों में मुस्कुराते हैं। हवा हमारी मुस्कान सलाखों के बीच से कैद खानों में फेंकती है, तो दीवारों से बंधे जिस्म ख्वाब में अंगड़ाई लेते हैं। ख्वाब जो जमीन के कुर्रे पर रहने वाले दिन और रात की तफरीक के बगैर देखते हैं। रात जो रोशनी का फाका करने तक हमारे सिरहाने अपना चिराग जलाती है। दिन जो हम पर रोज धूप की चादर चढ़ाता है, हम जिनकी गर्दनें फंदों के नाप से बनाई जाती। ओवर टू यू तैयबा। This poem, thank you, Salman Bhai. This poem is Our Necks Are Tailor-Made to Fit the Noose. So our necks are tailor-made to fit the noose. The sun drapes our bodies in the veil of sunlight every day until the wind blows it away. And the night lights up its lamp at our bedside until it starves of light itself. The ants live on our flesh till the sparrows seize them in their beaks, and we, as birdseed, can be heard in the hatchlings' chirps. When they return, after casting the ashes of our bones in the woods, brushing off their hands, we hold on to the fingers of the raindrops and run through the veins of the plants. And then at the first drop of the monsoon rains, like children rushing into towns and streets, we sparkle on every blade of grass and we smile in the flowers blooming on every trail. And when the wind carries our smiles through the prison bars, then bodies tied to walls stretch as if dreaming. Dreams like those seen by inhabitants of the earth without differentiating between day and night. Night, which starves itself of light to keep our bedsides lit, and day, which drapes us with a veil of light with every sun. Us with our necks tailored to the size of nooses. थैंक यू तैयबा। वो साजिश ढूंढ रहे थे
کسی خفیہ راستے کی تلاش میں انہوں نے سرکنڈوں کی بنی دیوار پر لپی ہوئی مٹی کھرچ ڈالی اور تیل کا چولہا الٹ کر انہیں جلا دیا. چھاؤنی کے نقشے ڈھونڈنے کو تھکے ہوئے جسموں پر مڑھا ہوا چمڑا ادھیڑ کر ہڈیوں میں سوراخ کیے تاکہ رشتہ ہوا گودا بغاوت کے جراثیم ٹیسٹ کروانے دارالحکومت بھیجا جا سکے. میلی چادریں بوٹوں تلے کچلی، ادھڑے ہوئے گریبانوں میں رال سے لچھڑے ہوئے ہاتھ ڈال کر سوکھی ہوئی چھاتیاں ٹٹولیں، فاقہ زدہ پیٹوں کو بندوق کے دستوں سے ٹھونک کر ان کے خالی ہونے کا اندازہ لگایا، پھٹے ہوئے جوتے سے جھانکتے ناخن کھینچ کر ان کے اصلی ہونے کا یقین کیا، آنکھوں کی جھیلیں آنسوؤں سے خالی کروائیں تاکہ ان کی تہ میں چھپا ہوا اسلحہ برآمد کر سکیں، قہقہے ضبط کر لیے اور مسکراہٹوں کے دانت توڑ ڈالے. ادھڑی ہوئی جیبوں میں غیر ملکی کرنسی کی تلاش سے مایوس ہو کر پلٹے تو جاتے ہوئے بچوں کے گلک توڑ گئے جس میں انہوں نے خواب جمع کر رکھے تھے. میں اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس کے خواب سمیٹ رہا ہوں، پھر اپنی نظموں کی کتاب ترتیب دوں گا. شکریہ طیبہ. So this one is In Search of the Secret Passage. Searching for the secret passage, they scratched off the earth plastered onto walls made of reeds and turned over the oil stove to set them on fire. In search of a map of the barracks, they ripped the leather skin off weary bodies, bored holes through their bones so that the seething marrow could be sent off to the capital to test for germs of rebellion. Soiled sheets were trampled under boots, tattered shirts were invaded by drool-streaked hands grabbing shriveled breasts, famished stomachs were pounded by guns to make sure of their emptiness, toenails peeping through torn shoes were pulled out to make sure they were real, and the lakes of their eyes were emptied of tears to reach the ammunition buried deep within. Laughter was confiscated, smiles were given broken teeth, and those ransacking ragged pockets in search of foreign currency were turned away disappointed. But as they left, they broke the piggy banks of the children in which they had been collecting their dreams. Thank you, Salman. شکریہ طیبہ. آخری نظم آپ لوگوں کے لیے. وہ مجھ سے اپنے اجداد کا قصہ سننا چاہتے ہیں. وہ مجھ سے اپنے اجداد کا قصہ سننا چاہتے ہیں جنہوں نے سانولی عورتوں کی کوکھ سے سفید بچے جننے کی خواہش میں املتاس کے درخت کاٹ کر سولیاں بنائیں اور ناریل کے تیل کی خوشبو میں ڈوبے مرد ان پر وار دیے. یا پھر جب وہ پہاڑوں کے اس پار پھیلی زمین کا خواب دیکھتے ہوئے اٹھے اور رباب بجاتے ہوئے بیٹوں کو اپنے ساتھ لے گئے جنہوں نے سرما لگی آنکھوں سے وعدے کر رکھے تھے. وہ آنکھیں جنہوں نے گھوڑوں کی پشت پر لدے ادھورے جسموں کو رباب اور وعدے اپنے سوموں تلے کچلتے ہوئے لوٹتے دیکھا تو ان کے کنارے بھیگ گئے. لوٹنے والوں کے پاس فتح کی کہانیاں تھیں جن کی چغلی ان کے بدن کھاتے تھے. عورتوں نے اپنے گیت صندوقوں میں رکھ دیے اور میرے پاس کہنے کو کوئی قصہ نہ رہا. الاؤ جل چکا ہے اور وہ مجھ سے اپنے اجداد کا قصہ سننا چاہتے ہیں جس کے ختم ہونے پر وہ مقدس کتاب کا واسطہ دے کر پہاڑوں سے اتارے گئے قبیلوں کی طرف کوچ کر جائیں گے. ناریل کی خوشبو میں ڈوبی ہوا مجھے املتاس کے پیڑوں سے کیا وعدہ یاد دلا رہی ہے اور سرما لگی آنکھیں اپنے گیت صندوقوں میں رکھ دینے پر آمادہ نہیں. پلیز طیبہ. So this poem is
the storyteller's dilemma. They want me to tell the tales of their ancestors, those who, coveting white offspring from the bosoms of tawny women, raised the Amaltas trees and built gallows, where they sacrificed men perfumed of coconut oil. Or the tales of those who rose dreaming of the lands stretching out across the mountains and took with them sons strumming the rubab, who had made promises to kohl-rimmed eyes which witnessed half bodies laden on horseback, trampling the rubabs and the promises under their hooves as they returned, and their rims soaked. The returners bore tales of victory, which were belied by their bodies, and the women locked away their songs in trunks, and I had left no tales to tell. The candle has burnt out, but they want to hear the tales of their ancestors, at the close of which, beseeching the sacred book, they will go the way of the tribes which were brought down from the mountains. But the breeze, fragrant of the coconut, reminds me of the promise to the Amaltas, and kohl-rimmed eyes will no longer lock away their songs in trunks. Thank you, Salman bhai. थैंक यू. एक नज्म छोटी सी और उसके बाद जो है वो आपसे इजाजत लेता हूँ. आखिरी जिसे कहना चाहिए नज्म आज की, चंद सेकंड का जो है वो आपको जहमत है. So this is the last. मर्सिया नहीं है. आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये मर्सिया नहीं है. मैं लापता हूं और मेरे दोस्त मेरे मरने के मुंतज़िर हैं. वो चाय पीते हुए मेरी सिफात के बारे सोच रहे हैं, जिनका जिक्र वो मेरे मर्सिये में करेंगे. मैं नेक आदमी था, मैंने कभी एहतिजाज नहीं किया. एहतिजाज अदीबों के मनसब से फर्कतर है. इसमें नारे लगाए जाते हैं जो अदब नहीं होते. हुकूमत को इन्हें बेअदबी समझती है. हुकूमत इन्हें बेअदबी समझती है. यूं तो मैंने 50 लापता होने वालों के बारे में 3.5 नज़में भी कही हैं, लेकिन वो इस बारे बहस करेंगे कि इन नज़मों का जिक्र मर्सिये में किया जाए या नहीं. ये इख्तिजाज की तरह अदब के मनसब से गिरा हुआ काम है. उन्होंने चाय मंगवा ली है, जिसे पीकर वो मेरा मर्सिया लिखेंगे. मर्सिये पर दाद हासिल की जा सकती है जो सरासर अदबी होती है. उन्हें कुछ एक्टिविस्ट भी मिल जाएं तो मेरी गुमशुदगी पर एहतिजाज का ठेका दे सकते हैं. उन्होंने इस ठेके के अखराजात के लिए हुकूमत के पास दरखास्त जमा करवा दी है. हुकूमती इमदाद से एहतिजाज के लिए दरकार कागज और कलम खरीदे जाएंगे और उस चाय की कीमत अदा की जाएगी जो वो एहतिजाज की मंसूबा बंदी के दौरान पिएंगे. चाय से मुझे याद आया कि वो इसी मेज पर बैठे मेरे गम में दुबले हो रहे हैं जिस पर मैं उनके साथ चाय पिया करता. लापता होने वालों का ताज़ियती रेफरेंस मुनक़िद नहीं किया जाता, वरना वो मुझ पर मकाले लिख चुके होते. इस ना होने वाले ताज़ियती रेफरेंस के बाद चाय की रकम मेरे लवाहिकीन अदा कर सकते हैं. तो उस बारे सोचने की जरूरत उन्हें नहीं पड़ेगी. वो चाय पी लें तो खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि लोगों के मरने पर उन्हें उसके खिलाफ एहतिजाज नहीं करना पड़ता. सिर्फ मर्सिया लिखने और चाय पीने जैसी अदबी सरगर्मियों में मुलव्वस होना काफी होता है. वैसे चाय की जगह अगर कॉफी मिल सके तो एहतिजाज को अदबी करार दिया जा सकता है. अगर ऐसा हो तो मेरे लवाहिकीन इसके लिए भी पैसे देने को तैयार हों. बहुत शुक्रिया. So this is the last poem, and this is a poem about writers and intellectuals. So it's called This Is Not a Eulogy. I am missing, and my friends await my death. Sipping their tea, they mull over the traits they will recount in my eulogy. I was a decent man.
I never protested. Protests suit not the stature of writers. Protests have slogans which are not cultured. The government thinks them uncultured too. Though I have written about 50 disappearances in 3.5 poems, they will debate whether my eulogy should mention these poems. Just like protests, this would be uncultured. Now they have called for tea, which they will drink before writing my eulogy. One can accept praises for eulogies, which are cultured entirely. And if they could find some activists, they would hire a protest over my disappearance. They have already petitioned the government for the costs of this contract. The government's aid will support pen and paper for the protest and the costs of tea consumed in its planning. And the tea reminds me that they agonized seated at the same table where we drank tea together. The disappeared received no memorial references, or they would have already completed their essays about me. And the costs of tea at this unorganized memorial reference can be paid by my bereaved, so they need not worry about it. After tea, they will thank the Lord that they need not protest at people's deaths. They need only be implicated in cultured activities like writing eulogies and sipping tea. But if one could get coffee instead of tea, would that perhaps make a cultured protest? If that is so, then my grievers will be ready to pay for that too. Thank you, Zeyba.